पिछले एपिसोड में हमने महसूस किया कि हर जीत सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होती। कभी कभी वो हमें पीछे देखने पर भी मजबूर कर देती है। आज एक और ट्रायल हमारा इंतज़ार कर रहा है, पर ये सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं है, ये नज़रिया का इम्तिहान है। क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा सीधा नहीं होता। कुछ यादें बदली जा सकती हैं, कुछ सच छुपाए जा सकते हैं, और कुछ फैसले सिर्फ समझने के लिए नहीं। मैं हूं द पेपर फेस, और ये है इस कहानी का 11वां एपिसोड। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमें कुछ लेटर आए थे, जिसमें से एक लेटर था प्रोफेसर फिग का, जो चाहते थे कि हम उनसे जाके मैक चेम्बर में मिले एंड उनको जो हमारे और लॉर्ड गॉक के बीच की जो मीटिंग थी उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये उनको जानना है। सो चलो जाके मिलते हैं प्रोफेसर फिग से। तो हम आ गए मैक चेम्बर में। You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रायल होने वाला है वो एग्जैक्टली रुकवुड कैसल में ही है, जिसके बारे में सेबेस्टियन बात कर रहा था जब हम फेलक्रॉफ्ट में उसके बहन से मिलने गए थे। जब हमने प्रोफेसर फिक को बताया कि हमें लॉर्ड गॉक के और हमारे मीट में क्या पता चला, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि इस लॉर्ड गॉक ट्रस्टवर्दी, क्या लॉर्ड गॉक ट्रस्टवर्दी है? तो हमने इसके ऊपर बोला हाँ, बिकॉज सिरोना भी उन पर ट्रस्ट करती है। एंड फिर हमने बात किया रुकवुड से, तो जो प्रोफेसर रुकवुड है उनको हमने बताया कि जो उनके डिसेंडेंट, उनका जो वंशज है, वो एक हिसाब से रैनरॉक के साथ काम कर रहे हैं एंड वो एक डार्क विजर्ड है। वो सुन के उनको शॉक लगा। वो बोल रहे कि जो उनका रुकवुड कैसल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर छुपी हुई है। हमें रुकवुड कैसल पे ही मिलेंगे प्रोफेसर फिग। तो हम पहुंच गए हैं रुकवुड कैसल। What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. ओके, यहाँ पे थोड़ा जासूसी करा है प्रोफेसर फिग ने पहुँच के। तो यहाँ पे जो रुकवुड के लोग हैं, एशबैंडर्स, और जो रैनरॉक के लॉयलिस्ट है, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बट प्रोफेसर फिग का बोलना ये है कि दोनों के बीच में ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नहीं दिख रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो हमें कैसल में
घुसने का कोई और रास्ता ढूंढना है। मेन डोर तो पूरा बंद दिख रहा है। You can't stop Ranrock's rebellion! This will not go well for you! Ah, up there! That's our way in! ओके, तो यहाँ पे ऊपर से हमको अंदर जाना पड़ेगा। If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि रुकवुड और जो रैनरॉक है वो कुछ खासा एक दूसरे से खुश नहीं है। रुकवुड को जो पावर रैनरॉक के पास है उसमें से कोई शेयर चाहिए, तो वो चाहता है कि जो पावर रैनरॉक के पास है वो उसको भी मिले। उसके बदले में रैनरॉक चाहता है कि वो हमें ढूंढे या फिर एंशिएंट मैजिक के सोर्सेस को ढूंढने में मदद करे। इसके अलावा और एक चीज है कि स्पेसिफिकली रैनरॉक रुकवुड के साथ इसलिए है जस्ट बिकॉज वो एक कीपर के वंशज है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कोई जरूरत नहीं थी रुकवुड के साथ हाथ मिलाने की। प्रोफेसर फिग का भी यही बोलना है कि रैनरॉक को और रुकवुड को कीपर्स के बारे में पता होना ये भी काफी डेंजरस चीज ऑलरेडी बन चुकी है। Any special words you want me to pass on to your mum? अब हम ये कैसल के तहखाने में आ चुके हैं। Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Oh no. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? बाप रे, हम लोग यहाँ पे काफी स्टेल्थ में है बिकॉज ये उनका मेन बेस है। सो प्रोफेसर फिग यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि जो अभी सोर्स हमने देखा वो छोड़ के भी एक और सोर्स है जो रैनरॉक ढूंढ रहा है। I heard something. I was hoping that was you. ओके, ये मिल गया हमें। Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now.
प्रोफेसर रुकवुड वो भी डर गए कि इतने पास में आ गए हैं रैनरॉक और रुकवुड जो उनका वंशज है अनफॉर्चुनेटली, एंड उन्होंने जो हम लोग ने अभी देखा वो एंशिएंट मैजिक का जो सोर्स था वो भी तोड़ दिया है और उससे पावर ले ली है। पर अभी वो चाहते हैं कि प्रोफेसर फिक यहाँ से चले जाए, तो हम अपना नेक्स्ट ट्रायल चालू करेंगे। I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और What a relief. I must say I'm curious to hear of Isidora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isidora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. ओह नो, जो हमारा शक था वो सही निकला। जो इसिडोरा ने सब प्रोफेसर्स को मिलने के लिए बुलाया था अपने घर में, वहाँ पे उन्होंने अपने फादर को बुलाया एंड सब प्रोफेसर्स काफी उत्साहित थे जानने के लिए कि इसिडोरा ने अपने पूरी जर्नी में क्या सीखा। तो वो बोलती है कि मैंने सीखा कि हम लोग अपनी ताकत से किसी का दुख
ले सकते हैं या फिर उसको दुख से मुक्त कर सकते हैं। उस चीज के दौरान उन्होंने एंशिएंट मैजिक का यूज किया और जो उनके फादर थे, जो उनके भाई की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे, उनके हार्ट से कुछ टाइप का पेन निकालने की कोशिश करी। उस दौरान जो एंशिएंट मैजिक का एक अलग टाइप या फिर बोल सकते हैं जो एंशिएंट मैजिक है उसको एक अलग रूप मिल गया जब वो ये कर रही थी। और जैसे पर्सिबल रेकम जो प्रोफेसर है उन्होंने जैसे ऑब्जर्व किया, ये जो मैजिक था वो एंशिएंट मैजिक की तरह नहीं दिख रहा है, उसका रूप अलग हो गया, उसका जो तरीका है दिखने का वो अलग हो गया। एंड आई थिंक ये सेम मैजिक जो है वो रैनरॉक विल्ड कर रहे थे। तो अगर ये लड़की ने जो इसिडोरा मॉर्गनॉक है, इन्होंने अगर अपने एंशिएंट मैजिक का यूज कंसिस्टेंटली लोगों का पेन टेक अवे करने में किया था और ऐसे जार में रखा गया है, अगर वो जास किसी के हाथ में लग गया और वो जास का यूज अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो काफी मुश्किल हो सकता है। You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isidora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. तो अभी हमने प्रोफेसर रुकवुड से पूछा कि जो बॉटल में भरा गया वो एग्जैक्टली क्या था। तो उन्होंने बोला वो दर्द था, वो पेन है। वो बोल रहे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये ट्रायल्स में वैसे वैसे हमको और क्लियर होते जाएगी ओवरऑल स्टोरी जो है इसिडोरा की। पर उसी दौरान हमारी थर्ड ट्रायल के लिए इन दोनों ने हमें इंट्रोड्यूस किया जो हेडमिस्ट्रेस है ओल्ड हॉगवर्ट्स की, फिट्जगेराल्ड। हमारा नेक्स्ट ट्रायल उनके यहाँ पे होने वाला है एंड वो काफ़ी खुश लग रही थी कि एक हॉगवर्ट्स स्टूडेंट ये ट्रायल्स कंप्लीट कर रहा है। ये ओवरऑल स्टोरी में एक अजीब सा कनेक्शन जुड़ते जा रहा है। I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. जो प्रोफेसर फिग है वो भी हमसे वही एक्सपेक्ट कर रहे कि हम स्पेल्स के बारे में और ज़्यादा जाने जब तक ये थर्ड ट्रायल रेडी होता है हमारे लिए। उसके अलावा वो चाहते हैं कि हम वेट करें कि लॉर्ड गॉक भी अपनी तरफ से कुछ न्यूज़ लेके आए, बिकॉज हमने जो हेलमेट रिट्रीव करने में उनकी मदद करी थी उसका भी कुछ ना कुछ तो आगे स्टोरी पड़ेगा, ऐसा उनका होप है। उसी दौरान हमें एक मेल आया पॉपी से कि एक कुछ उसके पास न्यूज़ है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है, तो हमें जाके उनसे भी मिलना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
याद रखिए, कहानी यहाँ पे रुकती है पर ख़त्म नहीं होती। तब तक के लिए याद रखिए इस चेहरे को।